गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फंडामेंटल राइट टू वॉक। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू वॉक है सेफ और डिमार्केटेड फुटपाथ्स पर, वो एक फंडामेंटल राइट है। पेडेस्ट्रियन राइट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन मूवमेंट ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स। तो इसलिए उन्होंने जो है गवर्नमेंट को कहा है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क भी लेकर आओ वॉकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वॉकिंग जो है मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन मूवमेंट है और ये सभी मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट से पहले क्या एग्जिस्ट करता है। जजमेंट ने एस्टैब्लिश किया कि जहाँ पर भी रोड एग्जिस्ट करती है वहाँ पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग लीगल ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि प्रोवाइड और मेंटेन करे पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के ऊपर आती है। ये बॉडीज़ को डिमार्केट करने पड़ेंगे फुटपाथ्स, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने पड़ेंगे पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़। कोर्ट ने कहा कि ऑब्लिगेशन जो है ये जुडिशली एनफोर्सेबल भी है। तो कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट टू वॉक जो ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मूवमेंट ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया प्रिवेलिंग अर्बन प्लानिंग अप्रोच को, जिसमें ऑटोमोबाइल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर पेडेस्ट्रियंस। अब कोर्ट के हिसाब से रोड्स और पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो मोनोपोली नहीं है मोटराइज्ड क्लास की। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस जजमेंट का कि रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंडिपेंडेंट रेमेडीज़ फॉर वायलेशन ऑफ पेडेस्ट्रियन राइट्स। सिटीजन्स जो सफ़र कर रहे हैं इंजरी, लॉस या हार्डशिप्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फुटपाथ्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं। और याद रखो ये जो रेमेडीज़ होंगी ये सेपरेट होंगी, मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर जो कंपनसेशन है उससे डिफरेंट होंगी। अब ये रूलिंग कब आई है? जब एक 5-year-old बॉय जो है उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज एक टैंकर ने उसे हिट किया था। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है वो सिर्फ ड्राइवर्स को और व्हीकल्स को ही रेगुलेट कर रहा है प्राइमरली, लेकिन ये एडिक्वेटली पेडेस्ट्रियन राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट जो है कोर्ट ने कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं है, तो इसलिए कोर्ट ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि एक ऐसा लेजिस्लेशन बनाओ जिसमें फॉर्मली डिक्लेयर किया जाए राइट टू वॉक, क्लियरली आइडेंटिफाई किए जाएँ ड्यूटी बियरर्स, और क्विक रेमेडीज़ हों वायलेशंस की, एक फुल टाइम रेगुलेटरी अथॉरिटी हो प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया रशिया लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया रशिया का जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है ऑपरेशनलाइज हुआ जनवरी 2026 में, और उसमें एक सोशल मीडिया स्पेकुलेशन थी कि 3000 रशियन ट्रूप्स इंडियन सॉइल पर स्टेशन किए जा रहे हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। तो LSA होते क्या हैं? फाउंडेशनल मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट होते हैं कंट्रीज़ के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, जिसमें रेसिप्रोकल यूज़ होता है एक दूसरे के बेसिस का, पोर्ट्स का, सिर्फ सप्लाईज, रिपेयर या फ्यूल के लिए। और ये सपोर्ट देते हैं ड्यूरिंग जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, पोर्ट कॉल्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हैं और ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन को कम करते हैं। प्योरली लॉजिस्टिकल इनका जो है ऑब्जेक्टिव होता है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होता है। इंडिया ने सबसे पहला ऐसा एग्रीमेंट जो है वो US के साथ साइन किया था 2016 में, और ऐसे एग्रीमेंट 9 कंट्रीज़ के साथ भी साइंड है इंक्लूडिंग रशिया। ओके, लगभग सभी का सेम बेसिक टेम्पलेट और पर्पस होता है। अब जैसे अगर हम देखें इसका कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन में इंडियन नेवल शिप्स ने जो है इन एग्रीमेंट्स का यूज़ करके बिना घर वापस आए अपना वहीं पर ही जो ऑपरेशंस किए हैं। ऐसे ही ईस्टर्न लद्दाख में जब स्टैंड ऑफ हुआ था गलवान वैली में, तो इंडिया ने इस लॉजिस्टिक्स पैक्ट का इस्तेमाल करते हुए हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग जो है ट्रूप्स के लिए अपने ली थी चाइना बॉर्डर के स्टैंड ऑफ के टाइम पर। अब ये रशिया का जो ये रेलॉस है इसकी वैलिडिटी 5 साल की है, लेकिन इसको फ्यूचर में रिवाइज भी किया जा सकता है। अब ये जो 3000 ट्रूप्स का क्लेम है ये जो है सही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में कोई भी मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं बताई गई है। एक ब्रॉड सीलिंग है जिसमें बताया जाता है कि कितनी कंटिजेंट्स या कितने शिप्स या एयरक्राफ्ट एक टाइम पर विजिट कर सकते हैं, लेकिन कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म स्टेशनिंग जो है वो नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया का ये भी अच्छा है इंडिया के लिए कि इंडिया को रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज़ का एक्सेस मिलेगा आर्कटिक के रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रोनिक्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो NPCI ने रिसेंटली ड्रोनिक्स प्लेटफॉर्म रोल आउट किया है। ये एक एंटरप्राइज ग्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है और करेगी ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो बिल्ड और स्केल करें टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स। एक कस्टम बिल्ट प्राइवेट ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, ये इनेबल करेगा ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट को स्केल पर। हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? DLT बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कन्वर्जन होती है करेंसी की और वेरियस एसेट्स की डिजिटल फॉर्म्स में स्टोरेज और मैनेजमेंट के लिए। अब होता क्या कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स पर साइमल्टेनियसली पीयर टू पीयर नेटवर्क में ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एग्जिस्ट करता है,
और एक बार अगर डेटा लिख दिया या हो गया, रजिस्टर हो गया ब्लॉकचेन में, तो उसको फिर आपको बहुत मुश्किल होता है उसको रेट्रोएक्टिवली अगर आप कुछ ऑल्टर करना चाहते हो उसे। तो एक ट्रांजैक्शन को वैलिड करने के लिए जो है सभी नोड्स को एक जो है वो एग्री करना होता है कि वो वैलिड है ट्रांजैक्शन। कोई सिंगल एंटिटी या कंप्यूटर जो है वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, इसलिए वो डिसेंट्रलाइज मॉडल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटीएम और आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक लॉन्ग टर्म एमओयू साइन किया है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाने का हिमालयन रीजन में अंडर भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। तो ये भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क क्या एक नेशनल ऑब्जर्वेशनल इनिशिएटिव है आईआईटीएम का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के लिए, जिसमें कि डेवलप किया जा रहा है लॉन्ग टर्म हाई प्रिसीजन क्लाइमेट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें जो है मॉनिटर करेगा ये मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, क्लाइमेट एक्टिव ट्रेस गैसेस, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, सॉइल मॉइस्चर ऑब्जर्वेशंस। एक रॉबस्ट नेशनल डेटाबेस बनाएगा जो डिटेक्शन में हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की, एडवांस करेगा क्लाइमेट चेंज रिसर्च को, इनेबल करेगा ज़्यादा एक्यूरेट सिमुलेशंस ऑफ इंडियन क्लाइमेट चेंज और एनहांस करेगा फ्यूचर क्लाइमेट प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इंसेंटिव्स डिसबर्स किए हैं लगभग 2400 करोड़ के अंडर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये एक फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एनकरेज करने के लिए जॉब क्रिएशन इन द फॉर्मल सेक्टर। ये स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एम्प्लॉयर्स को और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला जो है वो एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है इसमें, जैसे 1 मंथ की ईपीएफ वेज दी जाती है 2 इंस्टॉलमेंट्स में। एम्प्लॉयर्स को दिया जाता है जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में उनको असिस्टेंस दी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अभिज्ञान ऐप। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने अभिज्ञान ऐप लॉन्च की है। एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट करने के लिए क्राइम रिलेटेड डेटा के साथ। इसको एनसीआरबी ने बनाया है। तो इसमें होगा क्या कि जो पुलिस पर्सोनल हैं फील्ड पर, उन्हें वास्ट रिपोजिटरी ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इंस्टेंटली उनके फ़ोन पर मिलेंगे, ऑफ कोर्स विद ऑथेंटिकेशन फीचर्स। अब एनसीआरबी क्या है, 1986 में बनाई गई एक रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम ऑन क्रिमिनल्स के लिए के ऊपर, और ये रिकमेंडेशंस जो थी टंडन कमेटी की उस पर भी बनाई गई हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के कैंडिडेट हैं उनको इलेक्ट किया गया है एज अ जज ऑन इट लॉस 2026 से 2035 की टर्म के लिए। अब इट लॉस क्या है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी 1982 का जो ईवन क्लॉस है उसके ऊपर बनाई गई है। 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं इसके। हर स्टेट पार्टी जो है वो अप टू 2 कैंडिडेट नॉमिनेट कर सकती हैं, और मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं वो 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, री इलेक्ट भी हो सकते हैं। जुरिस्डिक्शन इसकी हर तरह के उस डिस्प्यूट पर है जो इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन से रिलेटेड है। इसमें डीलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम जोन्स भी आ जाता है, नेविगेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द सी आ जाता है। हैम्बर्ग जो है जर्मनी, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने $1.5 बिलियन की फाइनेंसिंग इंडिया को अप्रूव कर दी है अंडर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग ऑपरेशन। अब ये डीपीएफ है क्या, रैपिडली डिस्पर्सिंग फाइनेंसिंग देता है ये, ताकि बोरोवर्स जो है वो अपनी डेवलपमेंट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। पॉवर्टी रिडक्शन, क्लाइमेट फ्रेंडली, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है में उनको सपोर्ट करता है। फिर इसमें लोन्स, ग्रांट्स, क्रेडिट्स, गारंटीज कुछ भी दिया जा सकता है, और ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टर्कोइज नेक्सस इनिशिएटिव। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टर्की की जो प्रेसिडेंसी है UNFCCC COP31 की, उन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर टर्कोइज नेक्सस इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि इंटीग्रेट हो सके फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट अडेप्टेशन नेशनल क्लाइमेट प्लान्स में। और ये हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपनी NDCs और पेरिस एग्रीमेंट के एफर्ट्स को फार्मर इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज और इम्प्रूव क्लाइमेट फाइनेंस के साथ अलाइन कर सकें। अब फास्ट पार्टनरशिप क्या है, तो ये बेसिकली फास्ट पार्टनरशिप है कि जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स की बाय 2030, लोगों के लिए, क्लाइमेट के लिए और नेचर के लिए। तो बेसिकली एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये टॉपिक भी एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो 2 प्लेसेस ऊपर आ गया है 70th रैंक के साथ इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, इवेल्युएट करता है कंट्रीज़ को एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी के बेसिस पर। अब इसी साल के इंडेक्स में स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ने टॉप 3 पोजीशंस ग्लोबली सिक्योर की हैं, दे आर रिटेन भी की हैं इनफैक्ट। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is fundamental right to walk. This topic is important for your polity section. So in a landmark judgment, Supreme Court of India has held that a right to walk on safe and demarcated footpaths is a fundamental right under Part 3 of the Constitution. It has declared that pedestrian rights takes precedence over the movement of motorized vehicles, and it has called for a comprehensive legal framework to protect walkers. Court has observed that walking is the most basic form of human movement, and it predates all motorized transport. Thus, judgment has established that wherever a road exists, there is a corresponding legal duty to provide and maintain pedestrian infrastructure. The responsibility lies with the urban development authorities, municipal corporations, municipalities, and panchayats, and these bodies must demarcate footpaths, construct and maintain pedestrian facilities. The court has made that this obligation is judicially enforceable as well. So, court has said that fundamental right to walk on demarcated footpaths has more priority over the privilege of movement by motorized vehicles. It has criticized prevailing urban planning approach, which favors automobiles over pedestrians. According to the court, roads and public spaces cannot become the monopoly of the motorized class. Okay. A significant part of this judgment is the recognition of independent remedies for violation of pedestrian rights. Citizens who suffer losses, injury, or hardships due to absence of footpaths can approach the court for constitutional remedies and even compensation from public authorities. And remember that these remedies are separate from the compensation which is available under Motor Vehicles Act. This ruling has emerged from a compensation dispute involving a 5-year-old boy who died after being hit by a tanker while walking to the school with his father. The court has observed that Motor Vehicles Act primarily regulates drivers and vehicles, but it does not adequately recognize pedestrian rights. So the court has recognized the absence of a comprehensive legal framework. So the court has urged government to enact a law which would formally declare the right to walk, clearly identify duty bearers, provide quick remedies for violations, protect and enhance pedestrian infrastructure, and establish a full-time regulatory authority for planning, implementation, monitoring, and enforcement of the same. So the next topic is India-Russia Logistics Agreement. This topic is important for your international relations. So India-Russia Reciprocal Exchange of Logistics Agreement, which was operationalized in January 2026, has recently triggered a social media speculation that it allows stationing of 3,000 Russian troops on Indian soil or vice versa. And it has been claimed as a military alliance. So what are logistic supports agreements? These are basically foundational military cooperation agreement between countries for administrative purposes, and they enable reciprocal use of each other's bases and ports for supplies, repair, and fuel. They support during joint exercises, training, port calls, humanitarian assistance operations. They basically simplify essential administrative procedures and reduce the bureaucratic friction. They are purely logistical and they are not military alliance instruments. India signed the first such agreement with US in 2016, and we have such similar LSAs with 9 other countries as well, including Russia. All these agreements follow the same basic template and purpose. We have utilized these LSAs during our anti-piracy operations and even during the Galwan Valley standoff when we procured high-altitude clothing from the US using this logistics pact. So the Russia-India Logistics Pact is valid for 5 years, and it has a provision for future provision as well. So the so-called claim of 3,000 troops is not correct because the agreement does not specify a maximum upper limit of 3,000 troops. There is, of course, a broad ceiling which accounts for the size of contingents and number of ships or aircrafts which can visit during mutually agreed engagements. But there is no permanent or long-term stationing of the troops on either Russia or Indian soil. So a notable feature of this agreement is that it gives India access to Russian military facilities in the Arctic region. So the next topic is Drunix. This topic is important for our economy section. So NPCI has rolled out Drunix platform. It is an enterprise-grade distributed ledger technology which is designed to help organizations build and scale tokenization platforms. It is a custom-built private blockchain network designed to deliver high scalability and optimized performance. It enables blockchain deployment at scale. It is a high-performance distributed ledger platform. And what is blockchain technology? It is an emerging technology which facilitates the conversion of currency and various assets into digital formats for storage and management. So what is distributed ledger? It is basically a blockchain that has distributed a blockchain that is a distributed ledger which exists on multiple computers simultaneously in a peer-to-peer network. And once data is written to this blockchain, it is difficult to alter it retroactively. For a transaction to be valid, it has to be validated by all the nodes of the blockchain. Okay, no single entity or computer controls the entire network.
So the next topic is Bharat Climate Observation Network. This topic is important for your governance and environment section. So IITM and Aryabhatta Research Institute has signed a long-term MOU for establishing a climate observation station in Himalaya under the Bharat Climate Observation Network. So what is this beacon? It's a national observational initiative of IITM under Ministry of Earth Sciences to develop a long-term high-precision climate monitoring framework, and beacon will monitor meteorological parameters, climate active trace gases, atmospheric chemistry, and soil moisture observations. It will develop a robust national database that supports the detection of long-term trends, advances climate change research. It will also enable more accurate simulations of the Indian climate change and enhancing future climate projections. So the next topic is Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. This topic is important for your governance section. Prime Minister of India has disbursed incentives amounting to almost 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. It's a flagship employment generation scheme launched by government to encourage job creation in the formal sector. It provides financial incentives to employers and first-time employees as well. So it has two components. First one is to supporting the first-time employees with respect to giving them 1 month EPF wage up to 15,000 rupees in 2 installments. Then the second part involves the incentives for employers, so as to encourage generation of additional employment in all sectors. These employers will get incentives in respect of new employees with salaries up to rupees 1 lakh. Okay. So the next topic is Abhigyan app. This topic is important for your governance section. So Union Home Minister has launched this Abhigyan app in New Delhi. It's a centralized platform created to support law enforcement in making better use of crime-related data. It is developed by the National Crime Records Bureau. It enables field police personnel to access vast repository of criminal records directly on their smartphones. It is secured with two-step authentication, and it allows real-time fingerprint identification. So what is NCRB? It was established in 1986 to act as a repository of information on crime and criminals. It was set up on the basis of recommendations of Tandon Committee. So the next topic is International Tribunal for the Laws of Sea. This topic is important for international relations. So India's candidate has been elected as a judge of the International Tribunal for the Laws of Sea for 2026 to 2035 term. So this ITLAWS is an independent judicial body established by 1982 UN clause. This tribunal is composed of 21 independent members. Each state party may nominate up to 2 candidates, and members are elected for 9 years and may be re-elected as well. So this tribunal has jurisdiction over any dispute concerning the interpretation or application of the treaty or the convention. So these disputes may relate to delimitation of maritime zones, navigation, conservation and management of living resources of the sea, protection and preservation of marine environment, and scientific research. Okay, so the headquarters of it is in Hamburg, that is in Germany. So the next topic is development policy financing. This topic is important for your economy section. World Bank's Board of Executive Directors have approved $1.5 billion financing to India under the development policy financing operation. So this DPF provides for rapidly dispersing financing to help a borrower address the actual or anticipated development financing requirements. It supports the borrowers in achieving poverty reduction or climate-friendly, sustainable and inclusive growth. It can be extended as loans, credits, grants or guarantees, and it's an initiative of the World Bank. So the next topic is Turquoise Nexus Initiative. This topic is important for your environment section. So Turkey's presidency of COP31 2026 and Food and Agriculture Organization have introduced this Turquoise Nexus Initiative, which is aimed to integrate food security, water management, and climate adaptation into national climate plans. So this will help developing countries align their NDCs and Paris Agreement efforts with farmer-inclusive strategies and improved climate finance. So this is a proposed program under the FAST partnership, which is basically a multi-stakeholder partnership aiming to catalyze and accelerate the transformation of agriculture and food systems by 2030 for people, climate and nature. So the next topic is Energy Transition Index. This topic is important for your environment section. So India has moved up to 2 places to rank 70th in Energy Transition Index of 2026. This index is released by World Economic Forum and it evaluates countries on energy security, sustainability and equity, along with readiness on their policy, financial and infrastructure environments to support this transition. So Sweden, Finland and Denmark have retained their top 3 positions globally in this index. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.